Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of elements of modern physics. Let's begin. एठारे आमे एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कोर पेपर रो यूनिट नंबर 2 वेब पैकेट डुअलिटी एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यार फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ता सहित वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करिबा। प्रथम पार्टा वेब पैकेट डुअलिटी रो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस गुडी का। क्वेश्चन नंबर 1 डी ब्रोगली वेव associated with a moving material particle has a velocity dash than the speed of light. Material particle moving material particle ता सहित जो वेव एसोसिएटेड होइछ ताको आमे कहू छै मैटर वेव बा डी ब्रोगली वेव। से डी ब्रोगली वेव रो वेलोसिटी ता स्पीड ऑफ लाइट रो वेलोसिटी थारु अधिक ना कम किबा ता सहित समान। डी ब्रोगली कहले जे प्रत्येक मुविंग मटेरियल पार्टिकल संगे गोटे सिंगल वेव एसोसिएटेड होइछ ताऊ कहले मैटर वेव किंबा डी ब्रोगली वेव। तार वेलोसिटीटा स्पीड ऑफ लाइट रो वेलोसिटी थारु अधिक आसिला जाकि कॉन्ट्राडिक्ट कला। परवर्ती समय रे स्क्रोडिंजर आसिले याको करेक्ट कले जे मुविंग मटेरियल पार्टिकल संगे या गोटे सिंगल वेव नुह ये नंबर ऑफ वेव्स द्वारा ताहा आमे निरूपण कर दे परिबा। ताको टेक्निकली आमे कहूचे वेव पैकेट ग्रुप ऑफ वेव्स नोन एज वेव पैकेट जा फल रे ता स्पीड ऑफ लाइट थारु कम आसिला बा केतेक मीडियम रे आम देखले जे स्पीड ऑफ लाइट संगे समान आसिला। यानी कि करेक्ट आंसर कोन आसीबो ए मटेरियल पार्टिकल रो वेलोसिटी ता स्पीड ऑफ लाइट रो वेलोसिटी थारु अधिक आसुची ए सिचुएशन रे फास्टर। Question number 2 according to Schrodinger a moving material particle is not associated with one wave but with a dash। पूर्व क्वेश्चन टारे ताको आमे एनालिसिस कले जे डी ब्रोगली कहले जे सिंगल वेव एसोसिएटेड होइछ किंतु स्क्रोडिंजर कहले ना एटा सिंगल वेव नो वेव पैकेट द्वारा ता एसोसिएटेड one not one wave but with a wave packet। Question number 3 a wave packet consists of a dash of waves a number of waves जाको हम कहबा ग्रुप ऑफ वेव्स। वेव पैकेट रे गोटे वेव नु अनेक गुडे वेव रो कॉम्बिनेशन रे हमें वेव पैकेट पाइबा। क्वेश्चन नंबर 4 द वेलोसिटी ऑफ डैश इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। कहार वेलोसिटी के आम ग्रुप वेलोसिटी कहबा ए वेव पैकेट रो वेलोसिटी जहा ता जान के ग्रुप वेलोसिटी आसीबो ए नंबर ऑफ वेव वी कॉल वेव पैकेट। सो द वेलोसिटी ऑफ ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट। द वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट is called group velocity। Question number 5 the effect of dash produces successive wave groups। कहार इफेक्ट फल रे आमे वेव ग्रुप्स गोटे पर गोटे प्रोड्यूस होउची गोटे पर गोटे वेव ग्रुप आमे पाउचे तार इफेक्ट आमे कोन कहउचे से इफेक्ट होउची गोटे मॉड्यूलेशन इफेक्ट दैट इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेशन कारणरू आमे सक्सेसिव वेव ग्रुप्स पाई पारुछे। क्वेश्चन नंबर 6 इन ए डैश मीडियम ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन पार्टिकल वेलोसिटी। केउ माध्यम रे ग्रुप वेलोसिटी टा पार्टिकल वेलोसिटी थारु कम आसीबो से मीडियम टा होची डिस्पर्सिव मीडियम। दैट मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम रे ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी थारु कम आसीबो। इन ए डैश मीडियम ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ डैश इन वैक्यूम। तबे केउ मीडियम रे
ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी संगे सामान रहिबो ता होची नॉन डिस्पर्सिव मीडियम रे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम रे ताहा पार्टिकल वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी टा समान रहिबो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डैश इन वैक्यूम वेलोसिटी ऑफ लाइट रो वेलोसिटी वैक्यूम रे जहा ता संगे जानि कि समान आसीबो आणि ग्रुप वेलोसिटी is equal to particle velocity is equal to c speed of light in vacuum velocity of light in vacuum. Question number 8, whether a particle is moving relativistically or non-relativistically its velocity is always equal to dash. particle टा relativistically गति करि पारे किंबा non relativistically गति करि पारे किंतु तार वेलोसिटी टा सब बेले कोन रहइबो तार वेलोसिटी टा यानी कि तार ग्रुप वेलोसिटी संगे समान रहिबो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स ग्रुप वेलोसिटी. Question number 9, according to wave mechanical treatment the equation of motion associated with wave packet must be a dash equation. आमे जो वेव मेकानिकल ट्रीटमेंट व्यवहार कले से देखले इक्वेशन ऑफ मोशन गोटे वेव पैकेट संगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन एसोसिएटेड होइछि ताहा केउ प्रकार इक्वेशन दैट इक्वेशन इज ए वेव इक्वेशन. दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी कॉल्ड वेव इक्वेशन. क्वेश्चन नंबर 10, ए वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन. वेव फंक्शन टा गोटे मैथमेटिकल फंक्शन से रियल हो पारे किंबा कॉम्प्लेक्स हो पारे रियल और कॉम्प्लेक्स हुज वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डैश and time generates dash associated with the particle whose variation with respect to space and time generates dash associated with the particle wave packet associated with the particle. Question number 11, the de Broglie wavelength associated with a moving particle is independent of dash of the particle. de Broglie wavelength जे moving particle संगे associated ताहा कहा ऊपर डिपेंड करे नाही से पार्टिकल रो चार्ज ऊपर डिपेंड करे नाही. हम जो इक्वेशन देखुथिले लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p h टा प्लैंक्स कांस्टेंट p टा थला मोमेंटम टा मास इनटू वेलोसिटी मास ऊपर डिपेंड करछि वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करछि इवन इफ मोमेंटम ऊपर डिपेंड करछि डिपेंड करूनी कोन से पार्टिकल रो चार्ज ऊपर डिपेंड करूनी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. क्वेश्चन नंबर 12, लाइटर इज द पार्टिकल डैश इज इट्स de Broglie wavelength. यदि पार्टिकल हल्का हुए तार मास जदि कमी जाए तार de Broglie wavelength टा कोन हो जिवो कारण हम देखले लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय p h बाय mv यदि मास टा कमी जाउची de Broglie wavelength बढ़ी जिवो. de Broglie wavelength एवं मास inversely proportional. if lighter will be the mass then more be the de Broglie wavelength greater is its de Broglie wavelength. Question number 13, the matter waves are not dash in nature. matter wave गुडी का नेचर रे कोन नुहे matter wave टा गोटे electromagnetic wave नुहे matter wave बा de Broglie wave is not an electromagnetic wave. electromagnetic in nature electromagnetic नुहे. Question number 14, more is the velocity of particle dash is the de Broglie wavelength. velocity बढ़ी गले तार de Broglie wavelength मध्य कमी जीवो स्मॉलर. सेम इक्वेशन लैम्बडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv जदि velocity बढ़ुची डेफिनेटली de Broglie wavelength कमी जीवो कारण velocity एवं de Broglie wavelength inversely proportional. more is the velocity of the particle smaller is the de Broglie wavelength. next part नुहे सही पार्ट रो आ गोटे टाइप रहइबो वन वर्ड आंसर टाइप. आम गोटे पदरे उत्तर को लिखिबा. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल अकॉर्डिंग टू स्क्रूडिंजर पोस्टुलेट. मूविंग पार्टिकल संगे जे एसोसिएटेड ताको हम कोन कहिबा स्क्रूडिंजर को अनुसार
से हूँ गोटे वेब पैकेट ग्रुप ऑफ वेब्स एसोसिएटेड हो कि डी ब्रोगिल कहले गोटे सिंगल वेब एसोसिएटेड हो मूविंग पार्टिकल सागर। क्वेश्चन नंबर 2 whether the velocity of de Broglie wave associated with a moving material particle is less than or greater than speed of light। speed of light से कौन रोचे बढ़ी जाऊँगी जहाँफल आमर स्क्रोडिंजर वेब पैकेट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करागला ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट ठार कमिबा दरकार थिला किंतु बढ़ीगला। क्वेश्चन नंबर 3 whether the velocity of wave packet associated with a moving particle is less than or equal to that of velocity of particle। ये थिला डी ब्रोगिल वेव ये तो कौन वेब पैकेट रहे ता इक्वाल रहिबो स्पीड ऑफ लाइट सांगरे से इक्वाल रहिबो। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डी ब्रोगिल ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए फोटन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इक्वाल टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ता सांगरे समान होची कि डी ब्रोगिल वेवलेंथ फोटोनटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समय रे ता रेडिएशन रो वेवलेंथ सांगरे समान है कि यस ता समान आछि। क्वेश्चन नंबर 5 आर मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैटर वेव गुडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कि मैटर वेव गुडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नुहे नो। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन फोटोन रो रेस्ट मास केते 0 फोटोन रो रेस्ट मास 0। हाउ द वेलोसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल डी ब्रोगिल वेव इज नोन एज इंडिविजुअल डी ब्रोगिल वेव रो वेलोसिटी आमे केमिति जानिबा वी कॉल इट एज फेज वेलोसिटी दिस इज नोन एज phase velocity individual de Broglie wave। How the velocity of a wave packet is known as the velocity of a wave packet we call as group velocity we call it as group velocity। Question number 9 whether in a dispersive medium group velocity is less or greater than phase velocity। dispersive medium रे group velocity टा अधिक ना कम फेज वेलोसिटी ठारो ग्रुप वेलोसिटी आमर कम जाउची लेस देन दैट ऑफ फेज वेलोसिटी। व्हेदर इन ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ फेज वेलोसिटी नॉन डिस्पर्सिव मीडियम पाई ता समान रहिबो इक्वल। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच प्रोसेस प्रोड्यूसेस सक्सेसिव वेव ग्रुप्स केउ प्रोसेस द्वारा आमे सक्सेसिव वेव ग्रुप पाइबा से प्रोसेस को आमे कहउचे मॉड्यूलेशन that process is known as modulation। Question number 12 there must be a quantity which should change with respect to space and time and causes the motion of a wave। how this quantity is known as से quantity का हमें कौन कहिबा that quantity is known as wave function द्वारा आमे ताकू represent करि परिबा that quantity is known as wave function। next question number 13 which tells us what operation is to carry out on the quantity that follows it। ता हमको गोटे ऑपरेटर द्वारा ही आमे जानि परिबा an operator हम ऑपरेटर ही से सूचना दबा। what is the total probability of finding a particle in whole of the universe रे गोटे पार्टिकल को पाइबार संभाव्यता केते 1 यूनिटी that is 1। question number 15 how the velocity of particle is related to its de Broglie wavelength। de Broglie wave संगे से velocity टा inversely proportional equation टा lambda is equal to h divided by p means lambda divided by बोल कहली h divided by mv तारा वेलोसिटी संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गोटे पार्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तार फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एवं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस गुडी को डिस्कशन करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 ए मूविंग पार्टिकल इज एसोसिएटेड विथ ए डेफिनाइट डैश and occupies a definite dash in space according to classical mechanics। a moving particle is associated with a definite momentum तार momentum टा ही definite रहिबो and occupies a definite
dash in space, position. According to classical mechanics रे से moving particle ଟାର definite momentum ରହିବ ଏବଂ space ରେ ତାର ଗୋଟେ position ରହିବ, momentum and position. Classical mechanics view is not applicable for particles of dash dimensions. पार्टिकल गुड़िक जो आम आटमिक लेवल रे से समय रे आटमिक डायमेंशन रे क्लासिकल मेकानिक्स एप्लिकेबल हेनी, आटमिक आम क्वांटम मेकानिक्स की यूज करवा ताकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यूजफुल रोचे. क्वेश्चन नंबर 3, द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज अनसर्टेन विदिन द डैश ऑफ वेव पैकेट. वेव पैकेट रे से पार्टिकल पोजिशन टा अनसर्टेन विदिन द लिमिट ऑफ वेव पैकेट, से वेव पैकेट रे गोटे स्पेसिफिक लिमिट मध्य रे. क्वेश्चन नंबर 4, it is impossible to locate the dash and dash of the particle with 100% accuracy. It is impossible to locate the position and momentum of a particle with 100% accuracy कारण position and momentum data uncertain. Question number 5, a beam of dash wavelength is used to determine the dash of a particle. The beam of shorter wavelength is used to determine the dash of a particle, that is the position of the particle. The position of the particle, shorter wavelength ର beam आम यूज करुचे पार्टिकल पोजिशन को जानिया पाए. क्वेश्चन नंबर 6, dash can travel faster than the speed of light. आमर मैटर वेव बा डी ब्रोगली वेव स्पीड ऑफ लाइट रो अधिक बेगर जाउछ बोली थ्योरेटिकली पाइथिले. मैटर वेव Question number 7, an electron microscope is an instrument used to study very minute objects and it is uses dash beam. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साहाय्य आम गोटे छोट ऑब्जेक्ट रे तार स्ट्रक्चर को बारीकी से जानीपर. तेज क्यों प्रकार बीम से आम व्यवहार करुचे, दैट बीम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन मेथड यूज करके से माइन्यूट ऑब्जेक्ट रो स्ट्रक्चर को निरीखी जानी है. क्वेश्चन नंबर 8, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डैश साइज. माइक्रोस्कोपिक साइज में आम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नुहे. माइक्रोस्कोपिक जो एटॉमिक लेवल रे जो पार्टिकल गुड़िक से समय आम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करवा, किंतु माइक्रोस्कोपिक रे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नुहे जोटा बिगर साइज रोचे से आम क्लासिकल मेकानिक्स ही सिंपल व्यवहार करें तार पोजिशन मोमेंटम कैलकुलेट करने. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज. Then question number 9, in any simultaneous measurement of position and momentum of a microscopic particle, the accuracy is limited to the dash. So accuracy is limited to that of uncertainty relation. से ही accuracy लिमिट करुची. पोजिशन रो अनसर्टेनिटी, मोमेंटम रो अनसर्टेनिटी. द डैश ऑफ ए पार्टिकल गिव राइज टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सेटा होची पार्टिकल रो वेव नेचर. द वेव नेचर ऑफ ए पार्टिकल गिव राइज टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. मैटर वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डैश ऑन द पार्टिकल. मैटर वेव रे इंडिपेंडेंट कोडा चार्ज, पार्टिकल चार्ज संगे से डिपेंड करूनी मैटर वेवटा. नेक्स्ट आसी जाउछि केतेक वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 रोचे, हु डिस्कवर्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के डिस्कवर करथिले, हेजनबर्ग. राइट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस रे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल एक्स डेल पी एक्स टा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट डिवाइडेड बाय 2. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम तार प्रोडक्टा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2. राइट द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी.
टाइम एंड एनर्जी लिखले अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इंटू अनसर्टेनिटी इन टाइम ए ग्रेटर दैन इक्वल टू h कट डिवाइडेड बाय 2. राइट द हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आम लिखले एंगुलर मोमेंटम इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहाँ आम कहे आजिमुथल क्वांटम नंबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंटा से आम ग्रेटर देन हो कौटा ना h कट बाय 2. क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल के प्रकार माइक्रोस्कोप आम यूज करछे गामा टाइप माइक्रोस्कोप गामा रे माइक्रोस्कोप आम यूज करछे पार्टिकल पोजीशन को मापिया पाई बा जानिया पाई. क्वेश्चन नंबर 6 डायफ्रैक्शन ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ए स्लिट वेरीफाइज व्हिच प्रिंसिपल केउ प्रिंसिपल को वेरीफाई करूची इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन फेनोमेननटा ता होची अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल will be verified by using this. Question number 7 how much is minimum energy of a harmonic oscillator using uncertainty principle तार minimum energy टा केते ई minimum टा हमें कौन पाउछे h nu half h nu this is the minimum energy. Can electron exist in nucleus nucleus रे electron exist करूछे कि नुह nucleus भितर हमें proton एवं neutron पाउछे. हेजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल टू व्हिच टाइप ऑफ सिस्टम ता केउ प्रकार सिस्टम पई एप्लीकेबल ना माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पई माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पई हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल. व्हिच नेचर ऑफ पार्टिकल गिव राइज टू हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ता पार्टिकल वेव नेचर दउची हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल. एभली भाव में समस्त डैशपोरन टाइप सर्ट क्वेश्चंस एवं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस गुड़ी हम डिस्कसन करने. यूनिट नंबर 2 वेब पैकेट डुअलिटी तार फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस गुड़िक से भाव में वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस गुड़िक. नेक्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस एवं वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस. So with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.